आज का मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप के दौरान श्रीलंका के नाम रहा। श्रीलंका ने आज के मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया इन व्हाट कुड बी सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस पुट अप बाय द इंडियन टीम इन द recent past, which includes even today. I am Sakshi Mandwal, joined over here by my co-host and friend Amit Arora. Good evening, Amit. गुड इवनिंग साक्षी। श्रीलंका को बधाई देना चाहेंगे। 174 रनों का विजयी लक्ष्य था और सुपर फोर में लगातार दूसरी जीत के साथ कह सकते हैं कहीं ना कहीं फाइनल्स में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है श्रीलंका ने। भारत ज़रूर आज निराश होगा। बैक टू बैक डिफीट सुपर फोर में 174 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जहां पर दोनों सलामी बल्लेबाज पाथुम निशंका 52 रन बनाए 37 गेंदों में और इतनी ही गेंदों में 57 रनों का योगदान दिया कुशाल मेंडिस ने। चलिए चर्चा करते हैं यूरोप 2020 में। हमारे साथ हैं अजय रात्रा, फॉर्मर इंडिया विकेट कीपर, और साथ ही के एस कन्नन, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। गुड इवनिंग। अजय, श्रीलंका को बधाई, लेकिन भारत निराश हो गया। जी हामिद, बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा क्योंकि जो हम बात कर रहे थे कि इतना भारतीय टीम अच्छा क्रिकेट खेलती हुई आ रही है और इस टूर्नामेंट में जिस तरह से श्रीलंका के अगेंस्ट, ठीक है पाकिस्तान के अगेंस्ट हारे सुपर फोर में पहले, और अभी श्रीलंका के अगेंस्ट हारे। और इस टूर्नामेंट में अगर आप टीम के बारे में भी बात करें तो भारतीय टीम की जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसमें बुमराह को छोड़ के बाकी सब इनके पास था। ठीक है, टूर्नामेंट के दौरान रविंद्र जडेजा अनफिट हुए, बट ऑल एंड ऑल वेरी डिसअपॉइंटिंग कि भारतीय टीम यहाँ से लगभग बाहर हो गई है। Yes, and Kanan, somewhere if you were to just analyze the way the Indians performed in any given game, एक टीम जीतती है एक हारती है, but it always feels good if it's a good game that we get to witness. And today, खास तौर से अगर इंडियन टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, the last 2 balls when it was remaining, they needed 2 runs. Can you still believe the entire madness that transpired on the second last ball? If you would want to elaborate. No, nothing was there in the second last ball. Yeah. Can't bat, can't bowl, can't field. That is the way the Indian team performed. What are you expecting a miracle from the last 2 balls? Yeah. Firstly, your whole strategy is wrong. Whatever you did, only Rohit Sharma scored. Your batting has been collapsing. Your fielding has been collapsing. Your wicket keeper looks like he's unfit right now. He's missing a stumping. Your choice of bowlers, you're just going with 5 bowlers. And you're bringing in Ashwin so late. When you know that the openers are firing, you need to bring in variety. And do you think that Arshdeep has got the experience and the kind of psychological stress he was in the previous match to be bowling the last over, and here you're talking about 2 balls to go, what he'll do? Is he going to perform a miracle? No way. जी, कॉलर्स को भी आमंत्रित करेंगे। 011 दिल्ली का STD कोड है 23421084, 23421085 पर फ़ोन कीजिए और अपना आकलन भी बताइए। अजय, रोहित की कप्तानी को कैसे देखते हैं आप आज के मैच में? आई थिंक अमित, अगर आज देखें कि आज वी आर प्लेइंग विद 5 मेन बॉलर्स, एंड मेन बॉलर्स कहीं या एक ऑलराउंडर थे उसमें हार्दिक पांड्या एंड ऑल्सो दीपक हुड्डा वाज अवेलेबल। तो आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि पिछले मैच में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो थे और उन्होंने गेंदबाजी नहीं की थी। आज भी ठीक है, अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक जो पहले मैच में खेले थे ऋषभ पंत से पहले, और बैटिंग ऑर्डर भी देखें लगभग सेम है, तो वो बात मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आप प्लान करते हैं कि आपको छठा बॉलर चाहिए और इतनी पिटाई हो रही है फिर भी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, अगर उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है, देन यू वुड हैव गॉन विद दिनेश कार्तिक। यस, एंड अगर कनन हम देखें तो जो श्रीलंकन ओपनर्स थे, चाहे वो निशंका हो चाहे वो मेंडिस हो, जो उन्होंने एक ओपनिंग प्लेटफॉर्म दे दिया, they almost made the target look like a cakewalk. And somewhere it was pretty clear कि गेम वहीं से हमारे हाथ से जा चुका है. We did try to make a comeback, but then again it was a very faulty, inconsistent comeback from our end effort. See, the main thing is right through the tournament, our top order has been flopping. Yeah. You know, you look at KL Rahul, I think he's just lost it. We've had a problem. It's a dilemma now. You're not too far away from the ICC World T20. You forget the fact that 2 teams are going to come here. But if this is your preparation for the ICC World T20 against mediocre teams, I'm calling it mediocre because Sri Lanka was almost out of this tournament. They bounced back by beating Bangladesh. Then they beat Afghanistan. True. Here you lost to Pakistan. If that was an aberration, what was this? As regards the Sri Lankan openers, they played professional cricket. But at the same time, the Indian bowling has been very, very average. Your choice of using only 5 bowlers, you're not going for the 6th bowler. So, is it that only one Bumrah is not there, you're performing badly? Is it that one Jadeja is not there, you're performing badly? It's all very, very hazy right now. And I'll go to Amit's question of Rohit Sharma's captaincy. I think it's very lackluster.
I see him in the same mold of captaincy as he was during the IPL for Mumbai Indians. There's no big difference really. And here it's not a club tournament. You're playing for the country, and that passion seems to be missing. And you need to look at figures and who wins and who loses. As far as I am concerned, India is virtually out of this tournament. जी of श्रीलंका course, ने yes, correct. 2 मैचेस में 2 जीत के साथ 4 अंक ले लिए हैं और उनका जो रन रेट है वो भी काफ़ी हेल्दी है, +0.35, पाकिस्तान +0.13 एक जीत के साथ। तो रन रेट पर भी नज़र रखनी होगी। फिलहाल कुछ कॉलर्स हैं, आइए उनकी बातें सुनते हैं। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी सर, मैं रिंकी बात कर रही हूँ बलरामपुर यूपी से। जी रिंकी। जी आपके साथ साक्षी मैम है, उन्हें भी नमस्ते। नमस्ते, गुड इवनिंग। जी जी जी, और दोनों एक्सपर्ट को भी नमस्ते। क्योंकि नमस्ते मैडम। नमस्कार। जी 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 सर, जैसे मेरा बहुत दिन के बाद कॉल लगा है और सर मैं ये जानना चाहती हूँ सर से, सर जैसे भारत के लिए 2 मैच इम्पोर्टेंट थे, एक ये वाला और एक जो आने वाला टाइम पे होगा। तो सर आज तो श्रीलंका से वो हार चुका है, आने वाले टाइम में मैच होता है, अगर वो जीत जाता है तो क्या हम फाइनल तक समझ सकते हैं कि वो पहुंच जाएगी टीम? क्योंकि सर इंडिया इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। जी शुक्रिया। Yeah, of course we're sure India is important for each one of us. हम आपका वो सवाल लेंगे जुड़े हुए हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं वेंकट रेड्डी बोल रहा हूँ। जी वेंकट रेड्डी जी, वेलकम बैक अगेन ऑन अ टॉक शो। क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप? 1996 के वनडे वर्ल्ड कप में जी न्यू दिल्ली की फिरोजशाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड में श्रीलंका के साथ खेला गया मैच मनोज प्रभाकर का आखिरी मैच हो गया। जी क्या ये मैच भुवनेश्वर कुमार का आखिरी मैच हो सकता है? वेल वेंकट रेड्डी जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, आज जब गेम चल रहा था तो हमारे एक्सपर्ट्स ऑफ एयर हम यही बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से 1996 वाला अगर मैं इंस्टेंस उठाऊं, भुवनेश्वर कुमार के नहीं 1996 वाले इंस्टेंस का डिस्कशन चल रहा था कि कैसे वो गेम जब गया था तो उस गेम ने क्या रुख लिया था। लेकिन आपने यहाँ पर इसको एक और नया मोड़ दिया है कि जिस तरह से 1996 का मैच हुआ वैसे ही क्या आज की गेम को अगर देखा जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि भुवनेश्वर कुमार will all fire break loose on him? I think it's taking it way too extreme, Kanan. I बहुत ज़्यादा think extreme firstly I will answer that question. I don't want Ajay Ratra to answer the question. I think he was a young boy then. I was not. I don't want him in the firing line. Having said that, that was Yeah. probably the graveyard. Kotla became the graveyard for Correct. Manoj Pravakar. Right. And we were just talking about the Sri Lankan team. Yes. Then you had Sanat Jayasuriya, you had Arvind De Silva, you had Arjuna Ranatunga. How this team is evoking memories of Yeah. that time. Hanji. And as far as Venkat Reddy's memory goes, I think he's got a memory like nobody else Encyclopedia. has. I think he's got so many gigabytes of memory stored in his head. He's recalling everything where Prabhakar's career ended. But I also would like to remind him, as Prabhakar was getting flogged there Delhi police was caning spectators because entry into Kotla was so difficult. So these are the moments I'm talking about to lighten Yeah. ourselves because it is so harsh. Yeah. And that match, showed what Sri Lanka was. And here we are not talking about Kotla, we are talking about Dubai. So, but they are merciless, they are ruthless, they are demolishing you. But it just goes to show that, look at the condition in Sri Lanka. Their economic condition, their political condition, everything is in turmoil. But on the sports field, nothing is in turmoil. It's topsy-turvy for India. We are like beggars, hoping that somehow we can sneak in. To me, it's like you're, in a bear run of a stock market. How are you going to raise your head? जी बिल्कुल। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है एशिया कप 2022, इसे श्रीलंका ने ही मेज़बानी करना था, लेकिन जब नहीं कर पाए तो वो यूएई में हो गया। लेकिन वो बहुत खुश होंगे कि 2 जीत के बाद लगभग वो तय है कि फाइनल में जाएंगे। और भारत के लिए बहुत मुश्किल है, जो सवाल रिंकी ने पूछा था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे। लेकिन मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, आज के मैच में आपका हीरो ऑफ 2020 कौन होगा? कौन कौन दावेदार हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है गेंदबाज भी हो सकते हैं, और इनमें अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें, ओपनर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। दोनों ने 50 बनाए, निशांका ने और मेंडिस ने। और ओपनिंग पार्टनरशिप मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, 97 रन्स का था। Correct. तो इन दोनों में से एक दावेदार हो कप्तान सकता है। शनाका? एक्चुअली डिफिकल्ट है चूज करना। शनाका ने भी बहुत तेज 30 ऑट बनाए और 2 विकेट भी लिए। 2 विकेट भी लिए। तो इट्स सीम्स टू बी डिफिकल्ट, बट मुझे लगता है कि किसी ओपनर को। शनन, आप किसको देंगे? I think you'll have to give it to one of the openers, that has been really defining because, chasing 174, for them to give such a good start, it was very, very important. But I don't know, I will not be surprised with anyone getting the man of the match because if you go back to Saturday's match, the
man of the match was given to a player from the losing team. Correct. But now it really doesn't matter who gets the man of the match award because Sri Lanka has walked away with every honor. Right, of आई course. थिंक और इस टीम का मुझे लगता है ट्रेडमार्क भी कुछ इस तरह से रहा है कि कोई एक लंबी परफॉर्मेंस नहीं आई, मिलजुल के टीम ने परफॉर्म किया। बहुत बड़े नाम नहीं हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, बट इट्स अ टीम एफर्ट। तो इसे कप्तान को ही दे दो तो बेहतर है फिर। उन पे Hey, छोड़ देते हैं। not Rohit Sharma. श्रीलंका के कप्तान को। Yeah, of course, yes. जी, कुछ और कॉलर्स हैं हमारे साथ। हाँ जी, चलिए आपसे उनसे मिल लेते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्ते जी, राम राम जी। राम राम, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मेरा नाम है सुशांत, वेस्ट बंगाल बुधुरा ग्राम से बात कर रहा हूँ। हम वेलकम, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम पे। सुशांत जी, क्या पूछना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट, बातें है हमारे बहुत आखिर है जो बात है जो इंडिया ने वो सूखा वाला पिच और घास वाला पिच में बैटिंग बॉलिंग सही ढंग से नहीं कर पाते। हम बहुत दिन से आप लोग को मुख से सुनाई दिया, हम इसे सुनाए, तो ऐसे बात है ना, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जैसे डॉक्टर होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, ऑर्थोपेडिक होता है, ऐसा कोई डॉक्टर भारत इंडिया के लिए यदि कोई खोज मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये है मेरा सवाल। हेलो, कि हम, हाँ जी, पूछिए, कुछ और पूछना चाहते हैं आप? ओके, हमारे साथ एक और कॉलर इस में जुड़ रहे हैं। और हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं और आप और सभी एक्सपर्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या विराट कोहली की खराब परफॉर्मेंस, काफी मैचेस हम लॉस कर रहे हैं इस वजह से? जी, आपका नाम क्या है? मैं ज्ञान सिंह बात कर रहा हूँ। जी, शुक्रिया। आज जिस तरह से वो शॉट खेला विराट ने, इतना अनुभव होने के बाद ये फिर हो जाती हैं गलतियां इस तरह से? वैसे तो कम होती हैं, और बट हुई ज़रूर है यहाँ पर। आज कहूँगा कि काफ़ी ख़राब शॉट खेले, और वो भी जब सेट नहीं थे और आते ही इस तरह का शॉट एक्सपेक्टेड नहीं था। बट ओवरऑल अगर हम उनकी इस टूर्नामेंट की बात करें तो बहुत ख़राब नहीं रहा। इनफैक्ट कुछ हद तक क्या इस टीम में मैं कहूँगा कि अच्छी फॉर्म प्राप्त की उन्होंने। 2-3 मैचेस में शुरू में थोड़ा शेकी लगे इनिशियली, पहले एक और सेकंड में पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छी इनिंग खेले थे वो। आज ज़रूर कहूँगा जब आप अच्छे फॉर्म में आ गए तो उसके बाद ये शॉट नहीं तो बनता। मतलब क्रॉस बैट नहीं खेलना चाहिए, सीधा बल्ला खेल, कैसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि बॉल स्टम्प्स में है, और बिल्कुल जो क्रॉस बैट से उन्होंने ये ट्राई किया, और वो भी इनिशियली जब आई इन नहीं होती है आपकी, बहुत ज़्यादा रिस्की और मैं कहूँगा विकेट थ्रो किया, तो इट वाज अ बैड सिलेक्शन ऑफ शॉट। यस, लेकिन एक चीज़ का जिसका हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे और करते आ रहे हैं, मैंने खुद भी आपसे पूछा था कनन की विराट कोहली के परफॉर्मेंस को लेके, एंड वो अभी जब उनका सवाल भी था तो उन्होंने कहा कि क्या विराट कोहली की ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से हम हारे। एक तो मैं आपसे वो पूछूंगी, सेकंड ऑल्सो द फर्स्ट कॉलर जो उन्होंने पूछी थी बात की, जो हमारा परफॉर्मेंस आजकल हो रहा है, चाहे वो पिच ग्रासी हो या नॉन ग्रासी हो, दोनों पे ही हमारी टीम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। What do you think is the way out, or what do you see as I a way think out? he asked about doctors also. Do you need a Yes, do you need- orthopedic surgeon? You need this. I think we Yes, need that was on a lighter note. we need a magic doctor. We need a black magic doctor who can do some jadoo, for India to bounce back in this tournament. अभी तो लग रहा है कि you definitely need a doctor to resurrect this team. ऐसा लग रहा है आज टीम ऐसे घुट रहा है जैसे कि वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है। साफ बात तो ये है। Back to Virat Kohli, he's the soft target. You can Always. criticize him. Yeah. But you can criticize everyone. You can criticize Rahul, Hardik Pandya, Rishabh Pant, and I still expect that Rohit Sharma is playing for himself. He's not playing for the team. His captaincy looks uninspirational. His own fielding looks uninspirational. I think this is the body language of a defeat at captain. जी, तो आइए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को सुनते हैं। अब जब सुपर 4 में श्रीलंका ने भारत को 6 विकेटों से हरा दिया है, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय कप्तान क्या कहना चाहते हैं संजय मंजरेकर को, आइए सुने। Couple of frustrating nights. So just give your complete view of what happened in today's game. I mean, look, we just ended up on the wrong side. It is as simple as that. I thought, the kind of runs we got at the first half of our innings, we could have capitalized a little more. But those things happen. I thought when we finished our innings, maybe 10-15 runs short, we didn't capitalize. Like I said, we didn't capitalize on the first half, how we batted, and then the second half was not good for us. But again, I mean, the guys who are out in the middle can learn a thing or two from there, what they need to do and what kind of shot making can happen. But I mean, these things can happen
like this team was on a good run for a long time. So obviously, losses like this will get us going, will make us understand what we need to do to get better as a team. But yeah, I thought with the ball as well was a good effort in the end to take it till the last over, considering the start they got. And pull the game back from that situation was going to be tough. But I think, the spinners in particular, came out and bowled quite aggressively, got that wickets in the middle, and then towards the end, Sri Lanka held their nerve pretty well. Three seamers, bit of a tough proposition to handle three seamers without having the option of that extra seamer, you think, in these conditions? I mean, look, we thought about that. We gave a good thought about it, but we thought, with the bigger boundary, you can use the spin well. But unfortunately, the plan didn't work out for us. Their right-handers, batted for a longer period of time. I was thinking to bring Huda as quickly as possible and use the longer boundary, bowl to their left-handers and all of that. But I mean, it didn't work out the way we thought it would. But again, these things can happen. But yeah, I was quite happy with three seamers on a pitch like that. But you didn't have a choice, right? You didn't have the fourth seamer to bring in also with the fitness of Yeah, look, Avesh. I mean, Avesh was sick. Unfortunately, he's not pulled up that well. We've been monitoring him for the last few days as well. And he didn't turn up well. We made him go through some fitness as well, and he didn't respond that well because he was quite sick. So yeah, I mean, again, ideally, when we start touring and all of that, ideally the combination that we play with is always four seamers. But you also want to try with three seamers. What happens? What are the challenges that you have to face? Because come the World Cup, I want to be ready with all the answers. Because this is something that we haven't tried for a long time, playing with three seamers. Since the time we got Hardik back, we've always played with four seamers, Hardik being the fourth one. But yeah, I mean, as a team, you got to find some answers as well. Playing with five bowlers, what are the options? Where are you challenged as a team? And all those kind of things. Because when you're going to the World Cup, you want to be ready with all your answers. So I think we pretty much know now what to deal with when we play with three seamers or two spinners or four seamers and two spinners. Still a very good T20 side, and obviously this tournament is still alive. No long-term worries, right, for you when it comes to what's happened in these two matches? No, not really. This is the only two games that we've lost back-to-back since the last World Cup. We haven't lost many games. But again, I mean, these things will teach us a lot of things. This Asia Cup, we wanted to try and put ourselves under pressure. And this bowling combination was one of the things that I wanted to try with three seamers and two spinners and see how it goes. We're still looking for some answers, but obviously, like playing a game like this, you get a lot of answers when you play a game like this. And there has been two back-to-back games like this where it was a close finish, but I got to give a lot of credit to Arshdeep as well to come and bowl like that at the back end. Haven't played a lot. Yeah, exactly. I mean, Chahal is a senior pro now. He's been playing for a while. Bhuvneshwar, Kumar, these guys have been doing the job for us for a long time. So I need to get answers from guys like Avesh, Arshdeep and all those guys as well. Hard luck tonight. All the best for the rest of the tournament. Cheers, thank you. So that was Rohit Sharma, the captain of India. Our next award is for the catch of the match, and that goes to Surya Kumar Yadav. He gets a check of USD 3,000, and Mr. Rikan Pitti will present that award and the check. And the catch was the one that was instrumental in dismissing Charit Ashalanka. And there's that catch that won the catch of the match award for Surya Kumar Yadav. Next up, I'm going to invite the Sri Lankan captain Dasun Shanaka to sign the match ball for Mr. Yasser Arafat on behalf of gold medal. So he's doing that right now. And of course, congratulations to Dasun Shanaka, not only winning the match, but he's also the player of the match for tonight. So congratulations to Dasun. I'm going to ask you to take your award from Mr. Rizwan Sumar.
and a check of USD 5,000, a trophy and a check to Dasun Shanaka. 2 for 26 with his bowling and 33 of 18 balls with his bat. Well done, Dasun. We see wonderful timing with batting and everything, but your team has timed your own performance and the peaks of everybody's performance at the right time, because today was another brilliant show in a run chase. Yeah, absolutely. The environment has been set this tone for the team, and the confidence in the dressing room has really gained the confidence of the batsman again. Who do you think won you the game? Who were the guys more responsible for winning, the bowling team or your batting unit? I think batting actually. The bowlers, particularly in patches, they bowl well. But credit to Dilshan and Mahesh Teekshan and Charmik Karan, they bowled brilliantly in this game. And Indian batsmen really came after some of the guys, but we were able to manage the total into 173. You have the same kind of formula that India have adopted to go, hard at the bowling, and it seems like that's got all your batters from 1 to 7, 8, a decent hit in the middle. Yeah, absolutely. We had good discussions after the first game. We were very down in the tournament, but we know that what we can do in this tournament. So basically, Pathum and Kusal Mendis, they were absolutely brilliant today. So they set the tone for us today, and then after Rajapaksa and myself, so we finished it up. Splendid performance from you as well, player of the match, both with bat and ball. You haven't bowled much in this tournament. Yeah, it's due to the team combination. Charmika is always there for us, so he's bowling the 4 overs. So that's why I haven't been bowling my quota. So what I need to do is to do the best, to take the best decision that team needs. Tremendous all-round performance in a match that really mattered, led from the front. So congratulations on your win and this award, and all the best for the rest of the tournament. Thank you very much. And that's it from us from down here. And Dasun Shanaka getting the Player of the Match award, quite clearly also on our show Hero of the 2020. 33 runs and 18 balls with the strike rate of 183.33, 4 fours, 1 6, and along with that 2 crucial wickets that he took of Hardik Pandya and Surya Kumar Yadav made him the man of the match. Your say on that, Ajay? आई थिंक ऑलराउंड परफॉर्मेंस था, तो मतलब मैं दिया 2 ओपनर्स ने भी बड़ा अच्छा किया. आई थिंक एक नाम और हम मिस कर रहे थे, मधुशंका. हाँ, मधुशंका जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जिन्होंने 24 रन देकर 4 ओवर में 3 विकेट लिए. उन्होंने भी जो है इंडियन टीम को रिस्ट्रिक्ट किया 170 ऑड पे. तो आई थिंक ऑल एंड ऑल इन सब का अच्छा परफॉर्मेंस था. बट यस, शनाका को यहाँ पर जो मेन ज्यूरी थी उन्होंने सिलेक्ट किया. जी, अब हम आगे की तरफ देखें तो कल बुधवार को जो अगला सुपर 4 मुकाबला है कनन, वो पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान. तो फाइनल्स की दौड़ में ये मुकाबला कितना महत्वपूर्ण है? I think I expect Pakistan to win, and if Pakistan wins, then it gets more difficult. So we are going to play next on Thursday, India versus Afghanistan. So it's a very, very tight situation. You're virtually out of it. And you cannot be now reliant on what is going to happen. You got 0 points on the board in the Super 4. And from here, I think we are in as good a position or as bad a position as Afghanistan. And who would have thought this is going to be the script, Pakistan versus Sri Lanka? Everyone was hyping it towards India-Pakistan. And already been 2 India versus Pakistan matches. 1 India won and 1 India lost. Right. So I think the whole narrative has been, so lopsided. There are too many negatives, and this team, I repeat, doesn't look good enough to do anything big in the ICC World 20 in Australia. Wow. Well, we have to conclude now. So it's been a disappointing day for Indian cricket fans, because Sri Lanka has been able to beat India by 6 wickets. But I hope you're enjoying the cricket on All India Radio. So tomorrow we've got Pakistan versus Afghanistan, and then India plays the last Super 4 against Afghanistan on the 8th. लेकिन आज कार्यक्रम में आगे चर्चा करने के लिए अजय रात्रा आपका, एस करण आपका बहुत बहुत आभार. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. और सभी श्रोताओं का भी आभार. खेल है, खेल भावना से ही आगे बढ़ेंगे. तो अच्छे से सो जाइए. शुभ रात्रि. गुड नाइट. हीरो ऑफ द 2020 इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता